तो हेलो गाइस, आज का चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में। दूसरा यूनिवर्सिटी है, मतलब दूसरा यूनिवर्सिटी और दूसरा स्टेट का है क्वेश्चन ये। तो नीट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ से नहीं है, वहाँ से उठाया नहीं गया है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबम्यूकोसा इज थिकेस्ट इन स्टोमक, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, रेक्टम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Submucosa is thickest in esophagus. Submucosa is thickest in esophagus. Next question is infective stage of Entamoeba histolytica is. Infective stage of Entamoeba histolytica is binucleate form, tetranucleate form, minuta form, and sporozoid stage. So option B is correct. Tetranucleate form. Infective stage of Entamoeba histolytica is tetranucleate form. Next question is Kupffer cells are involved in phagocytosis, toxin secretion, enzyme synthesis, and sensory activity. तो option A is correct. Kupffer cells are involved in phagocytosis. Kupffer cells जो है ये phagocytosis में involved होता है. Next question is Kupffer cells are hormone secreting fat cells and most cells phagocytic. तो पहले क्या मिला था? Kupffer cells are involved in बोला है, तो ऑप्शन ए करेक्ट था, phagocytosis. तो इस क्वेश्चन के लिए Kupffer cells are involved in ऑप्शन डी करेक्ट होगा, phagocytic या phagocytosis. तो phagocytic cells जो है ये लीवर में पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kupffer cells. तो Kupffer cells आर ये एक स्पेशलाइज्ड फेगोसाइटिक सेल्स है जो लीवर में पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ विटामिन B12. विटामिन B12 का जो केमिकल नेम होता है साइनोकोबालेमाइन, एंड विटामिन B9 का जो होता है फोलिक एसिड. ये दोनों मतलब ब्लड के लिए यूज़ किया जाता है, साइनोकोबालेमाइन एंड विटामिन B9 फोलिक एसिड. तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन इज सिक्रेटेड बाई chief cells of stomach, Sertoli cells of testes, Paneth cells of intestine, Kupffer cells of liver. Option A is correct. Intrinsic factor of vitamin B12 absorption is secreted by chief cells of stomach. Intrinsic factor of vitamin B12 absorption is secreted by chief cells of stomach. Next question is the contraction of gallbladder is due to enterogastrone, cholecystokinin, gastrin secretin. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, cholecystokinin. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉलब्लैडर इज ड्यू टू, गॉलब्लैडर जो है ये कॉन्ट्रैक्शन होता है cholecystokinin की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेप्टिक सेल इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स secrete. Peptic cell in the gastric gland secrete intrinsic factor mucus HCl pepsinogen. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पेप्सिनोजन. पेप्टिक सेल इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स secretes पेप्सिनोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following glands does not produce any enzyme. कौन सा ग्लैंड मतलब एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियास, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लीवर जो है ये डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीटा सेल इन द पेनक्रियास secrete इंसुलिन. तो बीटा सेल जो है आइसोलेट्स ऑफ लैंगारेंस, बीटा सेल्स इन द पेनक्रियास secrete इंसुलिन. तो व्हाट डू अल्फा सेल secrete? अल्फा सेल, अगर बीटा सेल पेनक्रियास इंसुलिन secrete करता है तो बीटा सेल अल्फा सेल क्या secrete करता है? ऑप्शन दिया हुआ है बेजोप्रेसिन, ग्लूकागोन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्लूकागोन. अल्फा सेल इन द पेनक्रियास प्रोड्यूस ग्लूकागोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द duct formed when cystic duct joins with hepatic duct. तो पूछा है नेम द duct का नाम बताना है. when the cystic duct joins with hepatic duct, pancreatic duct, common bile duct, salivary duct. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, common bile duct formed when the cystic duct joins with hepatic duct. Next question is the circular muscle found at the junction of stomach and duodenum is.
तो सर्कुलर मसल फाउंड एट द जंक्शन ऑफ स्टोमक एंड duodenum. तो सर्कुलर मसल फाउंड at the junction of stomach and duodenum is anal sphincter, cardiac sphincter, and Meissner's plexus pyloric sphincter. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. जंक्शन बिटवीन स्टोमक एंड ड्यूडेनम के बीच सर्कुलर मसल पाया जाता है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर में पाइलोरिक स्फिंक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is an exocrine secretion? Exocrine secretion: oxytocin, saliva, thyroxine, vasopressin. Option B is correct. Saliva is an exocrine secretion. Which of the following is an exocrine secretion? Saliva is a exocrine secretion. Next question is which of the following is the vascular connection that exists between digestive tract and liver? तो बोला है which of the following is the vascular connection that exists between digestive tract and liver? Hepatopancreatic duct, renal portal system, hepatic sinusoids, hepatic portal system. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, hepatic portal system. Which of the following is a vascular connection? Which of the following is a vascular connection that exists between digestive tract and liver? Option D is correct, hepatic portal system. Next question is the parotid, submaxillary, and sublingual glands are located in the buccal cavity, stomach, lungs, intestine. The option A is correct, the parotid gland. Submaxillary and sublingual glands are located in the buccal cavity. तो ये माउथ के नीचे में होता है, जो थ्रोट के ऊपर एंड माउथ में का नीचे होता है buccal cavity. पैरोटिड ग्लैंड जो है submaxillary and sublingual glands are located in buccal cavity. Next question is the cells that are protective in function and found in two or more layers are called stomach layer, liver, simple epithelium, compound epithelium. Option D is correct, compound epithelium. The cells that are protective in function and found in two or more layers called compound epithelium. Next question is name the layer in the wall. तो बोला है name the layer in the wall of stomach that contains nerves and blood vessels. Lamina propria, mucosa, muscularis mucosa, submucosa. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सबम्यूकोसा जो है नेम द लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द स्टोमक. सबम्यूकोसा लेयर इन द वॉल ऑफ स्टोमक दैट कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए serous lining outside? Serous lining outside. Large intestine, small intestine, esophagus, stomach. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, esophagus जो है ये डज नॉट हैव serous lining outside. Next question is ptyalin in saliva is inactivated by mucus, bile, renin, HCl. Option D is correct, hydrochloric acid. Ptyalin जो है is inactivated by hydrochloric acid in the stomach. Next question is the pancreas secretes क्या secrete करता है? ऑप्शन दिया हुआ है pancreozymin and angiotensin 1, somatostatin and angiotensin 2. Option C is correct. The pancreas secretes somatostatin. Next question is which part of tooth is covered with enamel? Root, crown, dentine, all of these. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्रोन ऑफ द टूथ इज कवर्ड विथ एनामेल. तो एनामेल जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इज एनामेल एंड फाउंड इन टीथ और टूथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल क्वेश्चन दिया हुआ है. नेक्स्ट द इनिशियल स्टेप in the digestion of milk. Initial step in the digestion of milk in a child is carried out by lipase, trypsin, pepsin, renin. तो क्वेश्चन ने पूछा इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क डाइजेशन इन ए चाइल्ड इज कैरिड आउट बाय. ऑप्शन डी इज करेक्ट, रेनिन.
Next question is major function of large intestine is to regulate release of bile, secrete digestive enzyme, absorption of water, and elimination of solid waste. Secrete water in order to regulate blood volume. तो बोला है मेजर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर फंक्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट. लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड एलिमिनेट करता है सॉलिड वेस्ट को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय. तो इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है ऑप्शन में से तो ये पेनक्रियास बीटा सेल, एंड बीटा सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है एंड अल्फा सेल ग्लूकागोन को सिक्रेट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ टेक्स प्लेस होता है तो इलियम, रेक्टम, ड्यूडेनम, स्टोमक. ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्टोमक. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन स्टोमक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kupffer cells are present in. Kupffer cells are present in the liver, in the small intestine, in the pancreas, in thyroid gland. So option A is correct. Kupffer cells are present in the liver. Kupffer cells are present in the liver. Option A is correct. Next question is the outermost protective layer in the alimentary canal is called. Outermost protective layer in the alimentary canal is called. एलिमेंटरी कैनाल का जो आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको क्या बोला जाता है? विसरल, पेरिटोनियम, म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, विसरल पेरिटोनियम. आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर इन द एलिमेंटरी कैनाल इज कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिटाइलिन डाइजेस्ट द फॉलोइंग. पिटाइलिन डाइजेस्ट द फॉलोइंग प्रोटीन, स्टार्च, फैट, ऑल ऑफ दिस. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टार्च. तो पिटाइलिन डाइजेस्ट द फॉलोइंग स्टार्च. तो सलाइवा जो है ये डाइजेस्टिव जूस पिटाइलिन को कंटेन करता है, एंड जो स्टार्च जो है ये कन्वर्ट करके शुगर में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज secretin. Secretin is secreted from the epithelial layer of stomach, duodenum, ileum, rectum. Option B is correct, duodenum. Secretin is secreted from the epithelial layer of duodenum. Option B is correct. Next question is lacteals are found in the lungs, fat bodies, in the villi of the intestine, in the liver. So option C is correct, in the villi of the intestine. Lacteals are found in the villi of the intestine. Option C is correct. Next question is in the cells of islets of Langerhans in pancreas that secretes glucagon. तो पहले भी मिला है ग्लूकागॉन अल्फा सेल आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस करता है ग्लूकागॉन अल्फा. ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्लूकागॉन. एंड बीटा सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following performs the function of both endocrine and exocrine glands. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेनक्रियास इज करेक्ट. पेनक्रियास ये ग्लैंड बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Kupffer cells फाउंड इन ब्रेन, लिवर, लंग्स, थाइमस. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लिवर. Kupffer cells are found in liver. Next question is dash दिया हुआ है dash cells of the stomach gastric pits dash cells of the stomach's gastric pits secreted hydrochloric acid and intrinsic factor, peptic acids, parietal cells, sheath cells and goblet cells. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, parietal cells of the stomach's gastric pits secreted HCl and intrinsic factor. Next question is the saliva contains an enzyme called. तो saliva contain करता है कौन सा एंजाइम को?
क्या बोला जाता है, एंड देयर ब्रेक्स डाउन स्टार्च इन स्टार्च व्हिच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सलाइवरी एमाइलेज पेटाइलिन। द सलाइवा contains an enzyme called salivary amylase that breaks down the starch which is a complex molecule to give sugar, simple sugar. Option A is correct. Next question is foods. Foods containing which of the following? Foods containing which of the following nutrients are known as energy giving food? Carbohydrate, fats, protein, vitamin, lipid and protein. Option A is correct, carbohydrates and fats. Foods containing which of the following nutrients are known as energy giving food? Energy giving food जो है ये carbohydrates and fats, ये सबसे ज़्यादा carbohydrates and fats, ये सबसे ज़्यादा मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये फूड से ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन contain glands. Wall of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice, and the enzymes present in it finally converted to proteins to fatty acid, glycerol, glucose, amino acid. So option D is correct, amino acid. The wall of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice, and the enzymes present in it finally convert the proteins to amino acid. Next question is which are protein digesting enzyme? Which are protein digesting enzyme? Amylase, lipase, zymase, amylopepsin, trypsin, pepsin, stiepsin, zymase and pepsin, trypsin, pepsin and peptidase. So option D is correct. Which are protein digesting enzyme? Which are protein digesting enzyme? Option D is correct. Trypsin, pepsin and peptidase. Protein digesting enzymes are option D is correct. Next question is 39. In rabbit, the digestion of cellulose takes place in colon, ileum, cecum, rectum. So option C is correct, cecum. In rabbit, the digestion of cellulose takes place in cecum. Next question is name the site where digestion of protein occurs. Pancreas, rectum, liver, ileum. Option D is correct, ileum. Next question is microvilli of epithelial cells. Microvilli of epithelial cells. Option A increase the surface area, protect the cell, engulf the foreign matter and give movements to the cell. Option A is correct. Microvilli of epithelial cells increase the surface area. Microvilli of epithelial cells increase the surface area. Next question is when insufficient hemopoiesis result from inability of the stomach to produce intrinsic factor which is needed for the absorption of vitamin B12 in small intestine, it is a condition of. तो क्वेश्चन में बोला है when insufficient hemopoiesis result from inability of the stomach to produce intrinsic factor, तो which is needed absorption of vitamin B12 in small intestine, it is a condition of. ऑप्शन दिया हुआ है aplastic anemia, hemolytic anemia, pernicious anemia and thalassemia. ऑप्शन C is correct, pernicious anemia. Pernicious anemia. Next question is enzyme not found in pancreatic juice is. Enzyme not found in pancreatic juice is trypsin, lipase, nuclease, nucleotidase. Option D is correct, nucleotidase. Enzyme not found in pancreatic juice is option D is correct, nucleotidase. Next question is the primary dentition. Primary dentition in human differs from permanent dentition in not having one of the following type of teeth. So 44 primary dentition in human differs from permanent dentition in not having one of the following type of teeth: incisors, canine, premolars, molar. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रीमोलर. प्रीमोलर जो है डेंटिशन जो है ये बेबी टीथ है, कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ. 8 होता है इंसिजर एंड 4 होता है कैनाइन्स एंड मोलर्स होता है. तो इसमें प्रीमोलर्स इंक्लूड नहीं है. प्रीमोलर्स जो है ये बेबी टीथ है. तो यहाँ बोला ह्यूमन डिफर परमानेंट डेंटिशन नॉट हैविंग फॉलोइंग ऑफ द टीथ.
Next question is enzyme that is not present in the SSUHS entericus. Enzyme that is not present in SSUHS entericus is lipase, maltase, nucleases, nucleosidase. Option C is correct. Nucleases. The enzyme that is not present in SSUHS entericus is nucleases. Option C is correct. Next question is SSUHS entericus is referred to as pancreatic juice, intestinal juice, gastric juice, chyme. So option B is correct. SSUHS entericus is referred to as intestinal juice. SSUHS entericus जो है ये intestinal juice रेफर करता है intestinal juice को. Next question is identify the cells whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. Question 47 बोला है. 47 identify the cells whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. Chief cells, goblet cell, oxyntic cell, and duodenal cell. Option B is correct. Goblet cell. Identify the cells whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. Option B is correct. Goblet cell. Next question is jaundice is a disorder of excretory system, skin and eyes, digestive system, circulatory system. So jaundice जो है ये option C is correct. Digestive system. जॉन्डिस इज ए डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो जॉन्डिस जो है ये लीवर को इफेक्ट करता है एज ए वाइटल ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट है द ओपनिंग ऑफ वाइंड पाइप इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेगियल स्फिंक्टर. ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ये गैस्ट्रोइसोफेगियल स्फिंक्टर जो है ये मतलब फूड फ्लो टू द स्टमक को कंट्रोल करता है, फूड को कंट्रोल करता है फ्रॉम द स्टमक एंड इट्स कवरिंग प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड. ये भी फॉल्स है क्योंकि एपिक्लोटिस जो है ये फूड फ्रॉम एंटरिंग द वाइंड पाइप इसको प्रिवेंट करता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. दोनों फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ ए नंबर ऑफ परमानेंट टीथ. तो ये तो सबको मालूम होगा 32 टीथ. Next question is dental formula of adult man is. So 2123 divided by 2123. Option A is correct. 2 incisor है, 1 canine and 2 premolar and 3 molar. 2123. Next question is isolates of Langerhans are found in. कहाँ पाया जाता है? तो ये पेनक्रियास में पाया जाता है जो अल्फ़ा एंड बीटा. अल्फ़ा जो है ये ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करता है एंड अल्फ़ा बीटा जो है ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज epithelial cells of intestine involved in food absorption have on their surface pinocytic vesicles, zymogen granules, phagocytic vesicles, microvilli. तो ऑप्शन D is correct. Microvilli. Epithelial cells of intestine involved in food absorption have on their surface called microvilli. Next question is bile duct and gallbladder are connected by lymph capillaries, cystic ducts, hepatic ducts, lacteals. Option B is correct. Bile duct and gallbladder are connected by cystic duct. Bile duct and gallbladder are connected by cystic duct. दोनों कनेक्ट होता है cystic duct से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following enzymes is found in saliva. कौन सा एंजाइम सलाइबा में पाया जाता है? तो ये पेटाइलिन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो पेटाइलिन जो है ये इसको सलाइवरी एमाइलेज भी बोला जाता है. इज एन एंजाइम फाउंड इन सलाइवा. ये क्या करता है? ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूकागोन प्रोड्यूस्ड बाय ए अल्फा सेल. Glucagon produced by the alpha cells of the human pancreas is a hypoglycemic hormone, thyroid hormone,
कैल्सेमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, hyperglycemic hormone. Glucagon produced by the alpha cells of human pancreas is a hyperglycemic hormone. Next question is the process of conversion of excess of carbohydrates into fat is known as lipogenesis, glycogenesis, and none of these. So option A is correct, lipogenesis. The process of conversion of excess of carbohydrates into fat is known as lipogenesis. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइजेशन वर्ड मीन्स, डाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है? बर्निंग ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ब्रेकडाउन ऑफ फूड को बोला जाता है डाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन? तो ये तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1 2 3. 2 इंसीजर होता है एंड 2 कैनाइन टीथ होता है, 2 प्रीमोलर होता है एंड 3 मोलर्स होता है. तो टोटल 32 teeth in adult. Next question is generally which of the following protein and carbohydrate components are found in cow milk? Generally which of the following protein and carbohydrate components are found in cow milk? Albumin and lactose, globulin and casein and lactose, casein and fructose. So option C is correct, casein and lactose. Next question is लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, तो ये तो लीवर ही होगा. लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर. एंड पेनक्रियास जो है ये बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड से परफॉर्म करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज guts of various ruminants contain acidophils, halophiles, methanogens, all of the above. So option C is correct, methanogens. The guts of various ruminants contain methanogens. Next question is which has the highest percentage of presence in the human body? The question is which has the highest percentage of presence in human body? Hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon. Option B is correct, oxygen. Which has the highest percentage of presence in the human body? Oxygen. Next question is, तो ये था टोटल 63 क्वेश्चन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का. तो थैंक्स फॉर वाचिंग. नेक्स्ट और एक वीडियो में मिलते हैं.